अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेस्ट नंबर 3 हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स ओपन द लिंक। तो ठीक है, मुहिब, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड 2025। अच्छा, पहला सवाल है, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट process or activity in human life which aim to academic rationalism, development of cognitive process, all of these social adaptation। तो आई थिंक ये ठीक होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो तीनों ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड हेरिटेज टू स्टूडेंट्स, ब्रिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर चेंज। तो इसमें लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग सारे कुछ हैं। तो इसमें जो ब्रॉडर टर्म है, आई थिंक इट इज़ एजुकेशन, सो आई विल गो फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट स्टेप है, it is an organized systematic series of activities designed to enhance an individual work related to knowledge, skill and understanding. It is immediate practical application on the job. So education, learning, teaching, learning, changing behavior, teaching, importing knowledge, education overall है, training। सो इसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज़ इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो आई थिंक इट इज़ ट्रेनिंग। अच्छा, ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ये तो सबको पता है, लर्निंग है, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस इंटेंडेड फॉर लर्निंग बाय इंड्यूसिंग ए बिहेवियर चेंज इन द टॉट। अच्छा, ये टीचिंग, ठीक है। द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर इज, द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर इज कम्युनिकेशन, प्लानिंग। अच्छा, क्वालिटी स्कूल टीचर ऑलवेज, प्रोफेशनल टीच स्किल्स, ये सारे ठीक है। तो the first Pakistan Education Conference for setting direction of the education in Pakistan was held in 1947। अच्छा, education system of any country is based on ideology of the nation, ठीक है। So which of the following is helpful in knowing the nature of the students, which is helpful in teaching learning process? तो ये साइकोलॉजी है, नोविंग। It deals to total of all processes through which appropriate human and material resources are made available and effective to run the educational institutions like school, college or even university. So and effective to run the education institutions, so educational administrations की बात हो रही है। A process of the selection of the best choice from among several is known as decision making है। Curriculum reflects the culture of a society, ठीक है। It is a standard based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills। I think कोर्स सिलेबस तो वो छोटे छोटे चीज़ें हैं, करिकुलम में सब कुछ आता है, तो आई विल गो फॉर करिकुलम। अच्छा, इट इज़ समरी आउटलाइन ऑफ कोर्स, ट्रीटीज और कोर्स ऑफ स्टडी, इट इज़ सिलेबस या सिलेबस। ए समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एनी कोर्स टेक्स प्लेस एट द एंड, समेटिव एट द एंड होता है। The most appropriate method used to evaluate curriculum is all of these the most appropriate method used to evaluate curriculum। इसमें all of these ठीक नज़र आ रहा है सबको, और मुझे भी। आई थिंक इसका तो सही आंसर है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट होती है।
तो philosophical foundation of curriculum is concerned with philosophical foundation ideas. Students' needs and interest are important in psychological foundation, sociological foundation of education, I think society. Education acquired without any specific fixed period and place is called informal. What is the place of principal education administration manager of the school? What is the main center of the informal education? I think all of these. What is the teaching through deductive method from general to specific? Which of the following education system supports scientific process? I think realistic. A lesson plan is important aspects of teaching which is related to prepare all that the teacher wants to teach in limited period. ठीक है. Allama Iqbal Open University was established as recommendation of education policy in 1972. To select subject matter, one should consider uh, objectives. The quality of test measure, what is claims to measure is validity. A headmaster possesses qualified to excel in school matters. तो स्कूल लीडर है. A headmaster's planning of primary school can be called इसमें ये intermediate planning है. Which of the following is not correct about school? तो हाँ ठीक है. They are potential agents of conflicts and क्या है disintegration. ठीक है. Important factor of curriculum is to achieve the objectivity. Pedagogy is the study of teaching methods. A scoring guide used to evaluate the quality of students in subjective type exams rubrics. Teachers should present information to the student clearly and in an interesting way and relate this new information to the things students already know. According to John Davis, school is a social मशहूर MCQs है ये. The ability to influence a group towards the achievement of goal is leadership. When any headmaster select one of the alternatives among many decision-making alternatives. If a headmaster retains most of the authority to implement decision in any school is हेडमास्टर रिटेन्स ठीक है रखता है अपने पास. ये सेंट्रलाइजेशन है एक बंदे के पास. डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो सबके पास होती है. ये सेंट्रलाइजेशन एक ही बंदे के पास है. अच्छा. इफ इट इज़ अ सिस्टमेटिक inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. Research. Achha, this type of research is designed to help researchers better understand certain phenomena. The word it looks at how things work. Experimental, basic. Its attempts to predict future results of studying improving historical. तो ये historical है. अच्छा. This research is conducted with a scientific approach. ये scientific जब भी बात होगी तो experiment होगी. It is learning theory of education. ठीक है. ये all of these है. Behaviorism, cognitivism, constructivism ये सारे learning theories हैं. तो let's submit my response. We've scored 44 over 46. तो ये माई रिस्पॉन्स हैं. कहाँ पे गलती. हाँ ये इम्परेटिव प्लानिंग है. तो मैंने ये इंटरमीडिएट प्लानिंग कहा था.